doing well. This is Prince from ODA Class, and I welcome you all to today's session. Now, what are we going to study today? Today, we are going to study about displacement reactions. Now, it is one of the most important reactions in chemistry. So, it's very important that we understand this reaction from scratch. So, we are going to learn about it. But before we go any further, let me introduce you all to the most innovative live learning app in the history of India. It's ODA Class. And the proof is that we have got the award of most innovative edtech from the very prestigious Times Group. Now, I would like for all of you to come to ODA Class and enjoy the awesomeness of ODA Class. Now, how can you do that? To enjoy the awesomeness of ODA Class, you must come to our Bridge course. Now, our Bridge course starts from every Monday. So the coming Monday, Bridge course is going to start. It is a 1 week course where you get 3 math session, 3 science session. Apart from that, you also get a personal teacher, and this personal teacher is going to be your best friend. You have doubts, you need motivation, you want to solve your life problems, any requirement you have, you text our mentor teachers, you call our mentor teachers, and they are going to be there for you. Now, we also have facilities like you can solve homework on app, you can give tests on app, you can also get books and PDF from the app. So overall, you can say that everything you need for your studies is here in ODA Class. And this Bridge course is just a demonstration course so that you can see for yourself how good is ODA Class. Now, how to enroll for this course? To enroll for this course, you have to click on this link given in the description box. Once you click on this link, you will be taken to a page where you will be able to enroll into the Bridge course by only paying 29 rupees. Now, you people know that chocolates are costlier than this. So you are getting a course as amazing as Bridge course just for 29 rupees. So think about it and go for it. Now, do you see this guy? Do you see this guy? We are the same guy. Okay. So this is Prince of ODA Class, and I am your master teacher of chemistry. I have done my chemical engineering from NIT Calicut. I have overall 6+ years of teaching experience, and in these 6+ years, I have taught more than 60,000 students. So this was about me. Moving on. Now, we will start with displacement reaction. But before we directly learn about displacement reaction, there are certain prerequisites. तो कभी भी हमें अगर किसी बिल्डिंग पे चढ़ना है तो हम सीधा जंप करके रूफ पे नहीं पहुंच जाते हैं. पहले हम क्या करते हैं? स्टेप लेते हैं. स्टेप बाय स्टेप उस बिल्डिंग पे हम चढ़ते हैं, राइट? तो अगर हमको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सीखना है तो हमें सबसे पहले मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में समझना होगा कि ये होता क्या है. So metal reactivity series is simply the arrangement of metals in the descending order of their reactivity. All right. For example, in a company, you must have seen that there will be one CEO, then there will be certain managers below the CEO, then there will be certain assistant managers, then there will be other employees under them, right? So this is the hierarchy which is followed in a company, right? The same kind of hierarchy is seen in metals. Certain metals are very reactive, certain metals are moderately reactive, certain metals are having very low reactivity. Now, here you see that some metals like potassium, sodium, calcium, they are more reactive than hydrogen. And there are some metals which are less reactive than hydrogen. Now you can ask the question, why are we comparing metals with hydrogen? Hydrogen is a non-metal.
So guys, you have to understand this, that many of the reactions we do for metals are with acids. Now, acids contain hydrogen ions, so it becomes really important for metals to compare their reactivity with hydrogen. ठीक है, तो आपके घर के आसपास हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग होते हो। तो अगर आपको किसी से कोई काम पड़ता है और आपको किसी से कोई काम करवाना है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि काम करने वाला आदमी कौन है और उससे बना के रखना पड़ेगा, उसके बारे में जानना होगा, उससे कंपैरिजन करना होगा कि बाकी लोग कैसे हैं। तो वैसे ही हाइड्रोजन यहाँ पे बहुत काम की चीज है। हाइड्रोजन से हम रिलेट करते हैं मेटल्स को, ताकि हमें समझ में आए कि जब एसिड से रिएक्शन होगा तो क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, क्या हो सकता है। I hope this is clear to all of you. Moving on. Now, how can you remember this entire reactivity series? Now, you heard me correctly. आपको पूरा का पूरा याद रहना चाहिए। तो आप तो बोलोगे सर कैसे याद रहेगा, इतना मुश्किल है, कैसे याद करूं मैं? तो इसीलिए आपको मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूं। एक बहुत ही स्टूपिड सा सेंटेंस है, इसको आप याद कर लीजिए। एक बार आपने ये स्टूपिड सा सेंटेंस रट लिया, उसके बाद आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा रिएक्टिविटी सीरीज के रिगार्डिंग। ये आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो स्टूपिड सा सेंटेंस क्या है? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। तो मुझे जेब्रा बुलाना बंद करो और लर्न करो कि कैसे कॉपर गोल्ड को सेव करता है। ठीक है, तो सिंपल सा ये आपको याद करना है। अब आप बोलोगे इससे क्या फायदा है? तो देखिए, यहां पे आपको फायदा क्या है ये मैं समझाता हूं। यहां पे आपके पास क्या है? प्लीज है। यहां पे क्या है? पोटाशियम है। पी फॉर प्लीज, पी फॉर पोटाशियम। यहाँ पे स्टॉप है, यहाँ पे सोडियम है। एस फॉर स्टॉप, एस फॉर सोडियम। तो सिमिलरली अगर आप पूरा का पूरा याद कर लेंगे, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। तो इससे फायदा क्या होगा कि आपको ये भी याद हो जाएंगे। P for potassium, S for sodium, C for calcium, M for magnesium, A for aluminium, Z for zinc, I for iron, T for tin, L for lead, then H for hydrogen, then C for copper, S for silver, G for gold. अब हमेशा मैं ये लिखूंगा पूरा का पूरा, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, ये तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा आप बोलोगे। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे? आप ऐसे कीजिए, P for please, please stop calling me a zebra. Instead, try learning how copper saves gold. आप ये लिख लीजिए। अब यहां से भी अगर आपने 3-4 बार इसको पढ़ाई कर रखी है, इसको पढ़ रखा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहला जो पी है वो पोटाशियम का है, एस जो है सोडियम का है, सी जो है कैल्शियम, एम मैग्नीशियम, ए एल्यूमिनियम, जेड जिंक का है। फिर यहाँ पे जो आई आ रहा है वो आयरन का है, फिर टिन है, फिर लेड है, फिर हाइड्रोजन है, फिर कॉपर है, फिर सिल्वर है, फिर गोल्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू रिमेंबर दिस सेंटेंस which is very easy to remember. After that, you just write this letter, right? All these letters you write here, और जब आप ये letters यहाँ पे लिख लेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कौन सा मेटल कहाँ पे बैठ रहा है रिएक्टिविटी सीरीज के हायरार्की में। So I hope this is clear to all of you. Now, moving on. What is the application of this metal reactivity series? आप बोलोगे सर पढ़ाया तो आपने बहुत बढ़िया, समझ में भी हमें आया, लेकिन पढ़ के करेंगे क्या? इसका क्या यूज है, इसका मेटल रिएक्टिविटी सीरीज का? तो मैं आपको बताता हूं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बहुत ही बड़ा यूज है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज का। बिना इस मेटल रिएक्टिविटी सीरीज को समझे और याद किए बिना आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो पहली तो आपके मन में ये डाउट होगा कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं, फिर आगे भी हम पढ़ेंगे। तो यहां पे आप देखो, ये ए बी है, यहां पे सी है, ठीक है। अब ए बी और सी के साथ रिएक्शन होना है। अब अगर आप देखो इस तरफ प्रोडक्ट की तरफ, तो यहां पे आप देखोगे कि ए जहां पे था पहले, अब देखो जहां पे ए है ब्लू वाला, उस ब्लू वाले एटम को धक्के मार के
इस C ने निकाल दिया है, राइट? This C just pushed A out of its compound, right? So this is what has happened here. So this A is now lonely. It is alone now. And then we got B and C. So the question here is, how come the C has the ability to push A from its compound? So C has the ability to push A from its compound because C is more reactive than A. होता है ना कि कोई बेंच पे बैठा है, कोई बहुत ही हट्टा कट्टा आदमी आता है, उसको बोलता है चल निकल यहाँ से. So the C is saying the same thing to A. चल निकल यहाँ से, right? So this A has to follow the guidelines by C because C is more reactive than A. Okay, so here only metal reactivity series has found its application. Okay, because C is more reactive, it can replace A from its compound. And how would you know that whether C is more reactive than AB or not? You can know that by knowing the metal reactivity series. I hope this is clear with all of you. Moving on. Now, let's understand what is a chemical reaction. So a chemical reaction is a very simple to understand. In a chemical reaction, there is a rearrangement of bonds, you can say, or there is rearrangement of structure. What do we mean by rearrangement of structure? Rearrangement of structure means breaking of old bonds and making of new ones. For example, आपके पास एक शहर है जिसमें बहुत छोटे छोटे घर है, रास्ता कहाँ से निकल रहा है पता नहीं है. तो अगर आपको वहां पे एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाना है, बहुत सारे अपार्टमेंट्स बनाने हैं, आप कैसे करोगे इसको? आप उसके लिए क्या करोगे? आप उसके लिए पहले तो पुराने जो बिल्डिंग्स हैं उनको तोड़ना पड़ेगा और फिर नया बिल्डिंग्स को बनाना पड़ेगा. उसी तरह केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि पहले से कुछ बॉन्ड्स थे, वो बॉन्ड्स तोड़े जाएंगे और नए बॉन्ड्स बनाए जाएंगे और तभी एक केमिकल रिएक्शन हो पाएगा. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो मूविंग ऑन. Now, there are different types of chemical reactions. So, combination reactions where two components come together and form a single component, or two reactants come together and form a single product. Then there is decomposition reaction where a single reactant splits up and forms many, you can say two or more products, right? Then there is single displacement reaction, which we are learning today. And then there is double displacement reaction also where exchange of ions take place. I hope this is clear with all of you. Now let's come to our topic. The topic is displacement reaction, right? So finally we are here. Congratulations. So a more reactive species always displaces a less reactive species from its salt solution. For example, here in this GIF, you can check this out, that this magnesium is pushing this Ag from its compound and taking its place. How is magnesium able to do that? So magnesium is able to do that because you can check out here in our reactivity series that magnesium is here and this silver is somewhere here. So magnesium is much more reactive than silver. That's why it is possible. So coming back to our displacement reaction, you see magnesium will come, push Ag. So magnesium will say, I am more powerful than you. What are you doing here? Get out of here. Silver will away. It has nothing else to do here. Anyway, so I hope this is clear to all of you as well. So you can see few examples of displacement reaction. Like here you see copper sulfate is reacting with zinc and you are getting zinc sulfate and copper. Now few interesting things happen when a displacement reaction is taking place. When a displacement reaction is taking place, certain color changes are observed and these color changes are quite often asked in examinations. तो आपको एग्जाम्स में नंबर लाने हैं तो ये कलर्स आपको याद होने चाहिए और अगर आपको कलर्स याद है तो आपको बहुत ही आसानी से नंबर मिल जाएंगे. यही केमिस्ट्री का मैजिक है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो नंबर आपको ऐसे मिलेगा क्योंकि
इंफॉर्मेशन है, आपने टिक मारा, आपने जवाब लिखा, नंबर मिल गया। यहाँ पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होता, यहाँ पे कोई सिली मिस्टेक नहीं होता, सब कुछ बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कॉपर सल्फेट जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो पहले तो कॉपर सल्फेट का कलर आप सबको याद होगा, इट इज कॉल्ड ब्लू विट्रियोल, राइट। सो ये ब्लू होता है, इसलिए इसको ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। अब कॉपर सल्फेट जब जिंक से रिएक्ट कर रहा है तो ZnSO4 फॉर्म हो गया, जो कि कलरलेस है। तो क्या हुआ कि शुरू में तो हमारे पास कुछ ब्लू था, राइट, ऑल ऑफ यू हैव हर्ड दैट सॉन्ग, आज ब्लू है पानी पानी, राइट। तो शुरू में सब ब्लू ब्लू था, अब यहाँ पे सब कलरलेस हो गया है। तो क्या ऑब्जर्व करने को हमको मिलेगा, तो देखिए क्या ऑब्जर्व करने को आपको मिलेगा। जब कॉपर सल्फेट जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो शुरू में तो यहाँ पे ब्लू ब्लू नजारा दिखता है। उसके बाद क्या हो जाता है कि ये जिंक सल्फेट जब कलरलेस कंपाउंड फॉर्म होता है, then we will see that the blue color of copper sulfate is fading away. वो कलर धीरे धीरे फेड करने लगेगा, ठीक है, वो लाइट हो जाएगा ब्लू। ठीक है, और बहुत ज्यादा रिएक्शन करेंगे तो हमें कलरलेसनेस भी दिख सकता है। ऑल राइट, सिमिलरली एक और रिएक्शन है हमारे पास कि कॉपर सल्फेट आयरन के साथ रिएक्ट करके फेरस सल्फेट और कॉपर बना रहा है। तो अगेन ये रिएक्शन होगा क्यों, क्यों ये रिएक्शन होगा? ये रिएक्शन इसीलिए होगा क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। Because iron is more reactive than copper, it is capable of displacing copper from copper sulfate. All right, and here we get FeSO4 and Cu. अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कुछ कलर चेंजेस हो रहे हैं। So let's observe those color changes here. You see, when copper sulfate is there, it's blue. Everything is blue. When iron is reacting with it, FeSO4 is being formed. Now, when FeSO4 is being formed, you can see its color, it's greenish. So, what kind of color change we will see? Initially, it's blue, then it will become greenish. And you see that copper is coming out of the solution, right? Copper has to be pushed away because iron is showing its reactivity strength here. It is saying to this copper, right now, you are with SO4. You are enjoying your time with SO4. But now I'm here. I'm more powerful than you. I'm more reactive than you. So you can you please get lost? So copper will have to obey according to the rules of chemistry. Copper will have to say, okay, what can I do? I have to get lost, and it will get lost and it will become alone again. When it has become alone again, then where will it go? So here in this reaction, copper deposits on the iron nail, which is reacting here, right? So you see the iron nail will turn reddish, okay? The iron nail is turning reddish, and then you have this greenish solution. Why? Because what we are forming now is FeSO4, which is greenish. So FeSO, because of the formation of FeSO4, the solution has turned greenish. There are few more examples for all of you. Now let's see these examples. You see, similarly, magnesium can react with copper sulfate and MgSO4 will be formed, which is colorless. So again, a kind of reaction similar to zinc, right? When Pb reacts with CuCl2, then you get PbCl2, which is colorless, and CuCl2 is actually a green solution. So again, here you will see that the green color of CuCl2 is going to fade away. And I will highlight this, that these reactions are only possible because these metals, which are initially alone, these metals are more reactive compared to copper. If you put here silver, right? If you put silver here, let me give you an example. If you put silver here, Ag. Now silver is obviously less reactive than copper. So what will happen here? You can directly write with full confidence because Prince Sir of ODA has taught you this, that no reaction will take place here. कोई reaction ही नहीं होगा. ये कॉपर जो है वो भाव ही नहीं देगा सिल्वर को, बोलेगा अरे तुम कहां से आ गए, तुम हमें रिप्लेस करोगे। मैग्नीशियम होते, सोडियम होते तो बात भी हम सुनते तुम्हारी, तुम कहां से आ गए। ठीक है, तो सिल्वर की यहाँ पे कोई इज्जत नहीं है, मार्केट में काफी वैल्यू है,
महंगा बिकता है सिल्वर, बट यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, इस रिएक्शन में कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो मूव करते हैं। तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस। आशा है आप सबको अच्छा लगा होगा सुन के, समझ के। और मैं भी आशा करता हूं कि आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ के एग्जामिनेशन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन मिस ना करें, फुल मार्क्स आए। और फिर से मैं आपका वेलकम करता हूं मोस्ट इनोवेटिव लाइव लर्निंग ऐप ऑफ इंडिया में। और फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हमारा जो ब्रिज कोर्स है वो स्टार्ट होने वाला है, और इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम every Monday it starts. So the coming Monday is quite near. So what are you going to get in it? You are going to get 1 week course, right, where 3 maths and 3 science classes will be there. Then there is going to be a personal teacher to assist you at every step. Then you can do your homework on app, you can write your tests on app, and you can also get your materials, study materials from the app itself. All right, and how to enroll for the course? Really simple. In the description box you can find this link. Click on it. Once you click on it, then you will be taken to a page where all you very intelligent and smart people will get to understand very easily how to enroll. So you have to pay just 29 rupees. So it's like just purchasing Lays or Kurkure, right? For all of you. Now, so enroll for the Brisk course, and don't forget, in ODA class, we love to incentivize our students. तो जैसे आपके पापा आपको बोलते होंगे कि बेटा इस बार टॉप कर जा, साइकिल दिला दूंगा, वैसे ही हम भी ओडा क्लास में क्वाइंस देना पसंद करते हैं, और इन क्वाइन से आप गिफ्ट रिडीम कर सकते हैं ओडा क्लास से। तो थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।